Good evening, friends. Welcome to this edition of Thunder Thursdays happening in a pre-poned mode 2 days earlier. Of course, on a terrific Tuesday. Of course, there are reasons for it. Of course, I told you already 2 days by yesterday only in the miraculous Monday that I'll be busy this Thursday. So that is the reason I have pre-poned this session. So let me just check whether I'm live or not so that I can begin the proceedings. So, friends, this series, as we know, is coming to an end. This is the 24th episode, and I hope the series has been quite a value addition to all of you. And there have been quite a lot valuable points for you to carry home for from today There have been as quite well. a lot. Okay, great. So it is showing me as live. So welcome once again, and let me just share my screen and begin the proceedings. Okay, so today's topic, as I said, you have to watch it to see it. It is going to be another one or a similar one. Of course, many of you might have seen the notification. So, welcome once again to episode week number 24 of the 26 episodes. I'm so excited. Just two episodes remain after this. So, today's session is in lieu of the 16th June session. People postpone things, I'm preponing things, of course. So, today is Tuesday, 14 June, terrific Tuesday, taking place of a Thunder Thursday. So, as usual, all my presentations always begin with thanking the Lord Almighty has given me much more than what I deserve. And when it comes to finance, of course, my dad's thanks is no big thanks is small enough, or no small thanks is big enough in that regard to thank him what he has done for me. This is my brief CV. You all are aware of it by now. So today's topic is the continuation of the previous and the last in that series. How to choose the right mutual fund scheme, part three. There are quite a few points to ponder upon, putting your mind into the think mode. So I'll try to finish that in the next 30-35 minutes of today's session. Of course, so how to choose a mutual fund, part three. Let's go. So everyone wants best mutual funds in their portfolio. But the problem is that the term best is a very relative term. And the thing is that it varies from individual to individual, depends largely on their risk appetite, of course, the time horizon they're keeping, and of course, their particular specific needs that they're going to have that for that. So when you want to choose the best mutual fund for yourself, don't do it on hearsay. It is important you to first identify the right type of mutual fund schemes. बार बार यही बात बोलते हैं, अपना रिस्क एपेटाइट अपना रिस्क एपेटाइट क्या चीज होती है in that terms. If you want a middle road, hybrid funds or balanced funds, if you want you can say safe road, a fixed income fund or a debt fund or a liquid fund, if you want a slightly risky but yes equally gainly, then the option is the equity funds. Again, they are further subdivided into categories as I gave you at the end of the first session as well. So if you watch these three series, these three parts of this mutual fund series in continuation, you'll get to know that what exactly has been my endeavor behind explaining all this to you. So if you're investing for a long-term goal that is at least 5 years away, you can invest in an equity-oriented scheme. The time plays a bigger role, of course. And of course, if the time is bigger, your needs may be bigger as well. So if you want to just start off and are not very sure, you want to have a little exposure in equity, still want to be on the safer side, मैं जाऊं ना जाऊं, धीरे रहूं, तेज रहूं, whatever those things, you may opt for a ELSS, which is also known as equity linked savings scheme, or a tax saver fund, or an aggressive hybrid fund. I don't believe in the concept of aggressive hybrid as such, but yes, they do exist. I'm not saying they are not good enough, but they are good enough. But for me, NPS serves that purpose. When NPS invests in those, but the risk is mitigated to a lot extent. Of course, if I see the taxation potential in that, the taxation potential is a lot different in NPS than what it is in a hybrid mutual fund. It gives me no tax benefits. So this is one primary reason. My dad was pretty big fan of investments that are tax savvy, those who give you some at least tax relief, some tax potential, some tax benefits, even at the time of investment or at the time of maturity.
So he was always of those options that we should be selecting those options on priority, which serve a dual purpose, which serve us for the investment also, and which serve us for the taxation part also, which should serve both the things. Uh, so you need to be very, very specific in those choices about you can do. So if you want to have a little bit taste of equity, aggressive hybrid or a balanced fund or a tax saver fund is the road for you. But yes, we all know equities are volatile as we have been seeing the market. The market has been correcting itself. We still don't call it a bear market because for a bear market, the Sensex has to drop 20% from its peak. The peak was 18,600 in October 2021. We still have not touched 14,000 as the bottom. So anything above or close to 10% is always known as a correction. But if it touches close to 14,000 or roundabout, we can call it a bear market. But yes, अक्टूबर में 18,000 निफ्टी होने के बाद अब भी 15,000 के आसपास है, 15,000 something. So we are not officially in bear market, but that is part of life. What happens if you have to reach a destination and you come across a bumpy road full of potholes? What will happen? Your final destination may be delayed by 5 to 10 minutes. Or if you're stuck in a traffic jam on a good road, maybe 20, 30 minutes. But if you look at the overall journey, it depends upon how long your journey was. If your journey was 8 to 10 hours and you're late by just 30 minutes, it hardly matters. It hardly matters. But yes, if you take a double the time, then it does matter. And what does the double time being taken if you pull out a lesser growing option? The lesser growing option is, of course, the fixed income funds, or maybe a little more than that, the balanced funds. They'll take a longer time to reach to a destination. They'll be like auto rickshaw like over your car. Auto rickshaw full speed पे भी जाएगा तो कार की speed को beat नहीं कर सकता. You have to understand that. So your destination, your distance, your journey, your funds will all decide that. So tax saving funds, ELSS जिनको बोलते हैं, उनका lock in होता है 3 years का. They are tax savvy under 80C. Of course, PPF is also under 80C, but you can, again, those who are looking at wealth creation, they are skeptical to put in some amount in equity. So they can start with a full amount in PPF and a partial amount in ELSS so that they have an equity exposure also, they have risk mitigated also, they have a good amount in PPF also in that regard. And then they should not be bothered about the 1.55 thing. 1.5 thing is already taken care of with the PPF full installment. What exactly matters is that you are creating wealth for the long term, not looking only at the tax part. So the lock-in period is again to ensure कि जो investor नया investor है, he does not drop out अगर market volatile होती है तो. So on the other hand, you can say balance funds, they invest 1/3 in the fixed income, of course, which will cushion when the market down first. पूरा portfolio नहीं गिरता है. So that is the way new investors can also withstand the market falls. So if you are an experienced investor, you have invested in equities, 2 to 3 good flexi caps should be there, good enough in your portfolio. A flexi cap actually covers up for high volatile large caps, mid caps, and much volatile small caps as well. It has a fixed exposure, you can say a distributed exposure in that regard. So, but if you need the money in 2 to 3 years, the time span, you should choose a fixed income fund. Don't go in for equity because over the long period of run, the equity might not give a good return. Understand that we had a great fall in the first wave of COVID, March, April. It was more than 50% correction, 50% correction in the stock market. We were not in bear market. We were gravely, market had gone down by almost half, a little more than half, you can say 45% fall was there. But it covered up everything by October to November, and within 8 to 9 months of, or rather last 7 to 8 months of that drop. And from there on, we saw an enormous flurry of market going insane, reaching insane heights. From 48,900 in March 2020, the Sensex touched about 25, 26,000. And then in October 21, which is roughly 1.5 years from the first wave of COVID, it touched 62,000. The Nifty touched 18,600. Insane amount of growth. So you had 2 blockbuster years
So if the market is correcting by 10 to 20%, what is the harm? It is all right. हर जगह स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे नहीं होता है, बीच में कच्चा रास्ता भी आता है. So this volatility is known as the kacha rasta in your long journey. Always equity should be looked at like a long-term journey, not like a short-term journey. If you are investing for immediate needs, you don't want to, you can say, block your money for longer, liquid funds are a good option. Fixed income जो होते हैं वो bonds और G-Secs में करते हैं. G-Secs बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, G-C SECS, that is the short form for government security. They are less volatile and of course meant for short-term goals. और कोई कहे कि मैं फिक्स्ड इनकम से अपना लॉन्ग टर्म का सपना पूरा करूंगा, अपने 15 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए प्लान करूंगा जो आज की डेट में 3 साल का है, आई एम सॉरी, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्लो एंड लो एंड पेनफुल रिटर्न अनलेस योर इन्वेस्टेड मनी इज मोर देन हाफ. कि मेरा दुगना हो जाए, 15 साल दे रहे हो, शायद हो भी जाएगा, बट नॉट गारंटीड विद दिस द काइंड ऑफ यू कैन से द रिटर्न्स फिक्स्ड इनकम थिंग्स आर गिविंग राइट नाउ. So short-term, medium-term goals, long-term goals, I've given you this slide as a carry-home gyan in the first session. So you have to identify what are your goals. Short-term के लिए liquid, ultra-short, FMPs, fixed monthly plans, income funds are there. Medium-term के लिए monthly income plans, balanced funds are there, or you can say hybrid funds. Long-term, ELSS, diversified equity funds, or large mid-cap, small-cap, and of course thematic or sectoral funds, as we say. So now once you have selected the right fund category कि मेरे को किस कैटेगरी में जाना है out of these, मेरा गोल क्या है उसके हिसाब से, you will then now pick up from that category which has a decent performance track record. So don't go by the short term performance. In the second session I had shown you pretty much amount of data which showed you that आप हर चीज को कंपेयर कर सकते हो कि ये फंड ने मुझे लॉन्ग टर्म में कितना दिया, अगेंस्ट द बेंचमार्क कितना परफॉर्म कर रहा है, अगेंस्ट द पियर्स ये कितना परफॉर्म कर रहा है, एंड ये कितने साल से कितनी रिटर्न दे रहा है, कितनी 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न किसकी बहुत अच्छी है. Brain, it takes hardly 10 minutes to compare. Use your brain and then invest. So always look at the type of अगर आप फिक्स्ड इनकम कर रहे हैं तो look at the type of bonds that it holds, जिसके हाई क्वालिटी पेपर्स हों. अगर फिक्स्ड इनकम फंड है लेकिन लो क्वालिटी पेपर हैं, ऑफ कोर्स उसका रिस्क और बढ़ जाता है. So there are lot of schemes available, lot of categories available. Some people feel 40 फंड हाउस हैं, 1500 म्यूचुअल फंड हैं, 2500 3000 स्कीम है, तो कैसे सिलेक्ट करें? अरे सारी स्कीम आपके लिए नहीं है. We have to understand that. So the best thing is you have to narrow down. You rarely have a checklist कि आपका क्या क्या आपके लिए चाहिए. I've given you the checklist in the form of tips in the previous issue. I won't go in detail into that part. So check for past performance, meet diversification targets, match the scheme's risk with your profile, know your fund manager of that scheme, check for costs, read the fine print and remain patient for costs. So mutual funds will invest in securities, चाहे equity हो चाहे debt हो, और उनकी values will keep on fluctuating with the market move. That is perfectly okay. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप NAV रोज ट्रैक करें. ट्रैक करना चाहते हैं रोज कीजिए, I don't mind that. But उसके कारण आपका BP अप डाउन नहीं होना चाहिए. I do track it, used to track it daily till some time back. अब मैं कम करता हूँ in the volatile market. I don't track it at all. Of course, I do go on segregated buying in that option, but what I mean to tell you is that रोज देख के ऊपर नीचे हाई मेरा पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, मेरा ऊपर जा रहा है, ये तो बढ़ ही नहीं रहा, इट्स ओके. मैंने आपको बोला है आफ्टर 2 ब्लॉकबस्टर ईयर्स ये साल आया जिसमें कि स्टॉक मार्केट फ्लॉप जा रही है, बट दैट्स ओके. जब ब्लॉकबस्टर थी तो हम लोग कह रहे थे सारे पैसे बना रहे हैं. तो पैसे बनाने का टाइम नहीं, पैसे लगाने का टाइम अब है. So the funds, they are invested in various securities. So जितना वो diversify करेंगे in different sectors, अब सारे सेक्टर तो एक दिन गिरेंगे नहीं, गिर भी जाएंगे तो it will be bad luck, you can say bad fall. यहाँ आज मार्केट 2000 1800 1500 1000 पॉइंट गिर गया, that's fine. बट सारे सेक्टर गिरे नहीं. रियलिटी गिरा, आज स्टील गिरे, लेकिन फार्मा सेक्टर पिक कर गया, IT सेक्टर पिक कर गया, ऑटोमोबाइल गिरा,
एंड एफएमसीजी गिरा तो बाकी सेक्टर पिक कर गया. दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. अब आपके फंड की कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट है, दैट यू नीड टू नो. अगेन दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. जस्ट विद अ सिंगल क्लिक आई शोड यू द एनएवी पेज. एनएवी पेज पे सारा कुछ होता है, उसका एक्सपोजर कहाँ पे है. तो अगर मार्केट नीचे गई भी है लेकिन वो सेक्टर्स जिसमें वो फंड ज्यादा इन्वेस्टेड है वो नीचे नहीं गया है, तो दैट मीन्स योर एनएवी विल नॉट बी इफेक्टेड मच. एनएवी इज द नेट एसेट वैल्यू, या जिसको बोलते हैं खरीद फरोख्त की वैल्यू. सो जितना म्यूचुअल फंड रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं लेकिन वो टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते. आज आपका म्यूचुअल फंड ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी में ज्यादा इन्वेस्टेड है. अब वो सेक्टर ग्रो कर रहा है, बाकी सेक्टर गिर रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद शायद ऑटो और एफएमसीजी में मंदी आए, तो उस वक्त आपका फंड ग्रो नहीं करेगा. मार्केट थोड़ी सी बढ़ रही है 200-400 पॉइंट, लेकिन आपके फंड की वैल्यू गिर रही है बिकॉज ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ने उस दिन करेक्ट किया होगा. कई लोग फॉलो करते तो आई कीप ऑन गेटिंग दिस क्वेश्चन डेली, सर मार्केट तो कल 500 पॉइंट गया था, मेरा एनएवी नीचे हो गया, तो मेरा परसों भी नीचे गया था. सर आप डेली देख रहे हो तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ हार्ट अटैक सिचुएशन फॉर योरसेल्फ? डोंट डू दैट. If you can't bear the loss, don't do that. Don't enter into the market. So, अगर आपका म्यूचुअल फंड rather than one particular sector, it is diversified in various sectors, उसका रिस्क ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है. अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर टाइम होराइजन चाहिए. अगर आप सिर्फ डालेंगे और निकालेंगे 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. इक्विटी में जाना है तो मिनिमम 5 years, मिनिमम, मोर नहीं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा. मैक्सिमम तो 10, 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. And insane values can be achieved by mutual fund by the power of compounding. So जितना आप लंबा टाइम होराइजन देंगे, नो डाउट रिटर्न्स बहुत हाई जाएंगे और रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. अगर आपने 10 की रुपीस की एनएफओ खरीदा है जो 25 साल में ग्रो करके कंपाउंड करके उसकी वैल्यू शायद 1800 रुपए हो गई है एनएवी की, तो अगर उस वक्त मार्केट वॉलेटाइल हो भी जाएगा, 10% वो गिर भी गया, तो कितना गिरा? वो 1620 पे आएगा. आपने 10 रुपए पे खरीदा है. आई एम टॉकिंग ऑफ 20-25 ईयर्स, जस्ट एज एन एग्जांपल. अगर वो उस वक्त 10% भी गिर जाए, करेक्शन हो जाए, विच इज हाईली अनलाइकली, और बहुत मार्केट गिरेगी तो वो कर दे, तो 1800 का 10% 1620 होगा ना. 1800 से 10 रुपए पे तो नहीं आ जाएगा वो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. जितना आप लंबा टाइम देंगे आपका रिस्क पोटेंशियल उतना ज्यादा नीचे चले जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस रिस्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? रिस्क वही है कि वॉलेटिलिटी है, मार्केट अप डाउन जा रही है, तो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इरोड ना हो जाए, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो खत्म ना हो जाए. एंड दैट इज वेयर इट मेक्स अ डिफरेंस. इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, कुछ साल माइनस के बट कुछ साल प्लस के, ओवरऑल रिटर्न्स विल बी क्वाइट रीजनेबल. और इक्विटी में रीजनेबल ही 12-13% होता है. 12-13 हम लोग एवरेज रिटर्न गिनते हैं, विच इज काउंटेड एज रीजनेबल. So if you have invested in those time periods, you need to remember that your returns need to be in sync with the time invested. आपकी एवरेजिंग ऑटोमेटिकली पड़ जानी. आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपने हाईवे पे गाड़ी 110-120 पे चलाई है, आगे रोड खराब आ गई तो आपकी स्पीड 40-50 पे आ गई, आपकी एवरेज तो 80-90 पड़ेगी ना. एंड 80-90 इज नॉट अ बैड स्पीड. अगर आपको जाना ही 80-90 किलोमीटर था तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, इवन विद अ बैड रोड, the bad patch of where your speed had dropped to 30-40. So remember, try to understand that. So time horizon differs for every category. Equity के लिए long time horizon, fixed income plans के लिए short time horizon. I gave you the list right now. We all seek for returns from an investment, dividends, liquidity, risk management, flexibility, and of course, my favorite, tax benefits as well. So what do you seek from the thing? अब म्यूचुअल फंड में बहुत लोग जब स्टार्ट नहीं करते तो दिस बॉटम लाइन इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल. वो क्या होती है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. अब जो ये बात मैंने आपको बोली, ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव डू यू वरी अबाउट स्पीड और डेस्टिनेशन एंड हाउ टू गेट देयर? You don't count the bumps or speed breakers, but focus on your destination safely in time. The same is with mutual funds. Don't worry about the daily NAV fluctuations, but focus that how it is taking you closer to your financial goal. आपका गोल है कि 30 रुपीज NAV पे मैंने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट,
जब ये 60 पे पहुंच जाएगा या डबल हो जाएगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल योर डबलिंग इज योर एम. अब ड्यूरिंग द ड्राइव देयर विल बी टाइम व्हेन योर स्पीड ड्रॉप्स टू नियर जीरो, बट द व्हीकल पिक्स अप स्पीड once you get over the bump and continue your journey. As I said, smooth road पे 100 10 20, उस पे 30 40, average 80 90. So at the end of the day what matters is the average speed. अगर average speed 80 90 आई है तो आप अपनी डेस्टिनेशन में अगर 1 घंटे में पहुंच गए हैं तो विल यू रिमेंबर द पॉट होल्स? आप यही कहेंगे अगर रोड स्मूथ होती ना तो शायद मैं 55 मिनट में पहुंच जाता. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इन 55 मिनट्स एंड 60 मिनट्स? हार्डली. बोलते ना अपनी स्पीड 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर कम कर लो तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन ओनली 2 to 3 मिनट्स लेट, जो वो एक्सीडेंट के बारे में वार्निंग देते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. इट डज नॉट मेक एनी ह्यूज डिफरेंस. व्हाट मैटर्स इज द एवरेज. सो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे बम्प्स आ सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, बट व्हाट मैटर्स इज देयर टोटल एवरेज एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन. मार्केट जितना नीचे जाता है उससे डबल स्पीड पे ऊपर जाता है, इतना याद रखिएगा. अगर वो ऊपर नहीं जाता होता तो 1992 में सेंसेक्स वाज 4000, अब 62,000 टच किया है. प्रिडिक्शन है कि बाय 2025 इट विल टच 2 लाख. वो ऊपर जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तभी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं. और ओवर द पीरियड ऑफ 20 years, the past 20 years average has been 12%. When we talk of 12, कुछ साल ऐसे आए होंगे जहां पे 20-24 मिला होगा और कुछ सालों में 2% 1% मिला होगा, तभी तो एवरेज 12 आई है. अब आप एंटर 1 और 2 वाले में किए हैं तो आप चाहते हैं कि आपको 24 मिले. सो लुक एट द एवरेज. इफ द 20-year एवरेज इज 12, इट डज नॉट मीन वो लीनियर फैशन में गया है. The market functions in a wave format. The crest and troughs are there. So every economy and market go through that period of growth and recession. आपके क्लिनिक में जब आप even when you having good OPD क्या पोस्ट मिलती है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, then it goes down. You thank God something, अच्छा रेस्ट मिला यार, बहुत टायरिंग वीक था मेरा. वीकेंड पे पेशेंट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, संडे खराब जाता है. Those approaches, just an example. Which impacts your funds return, but only in the short term. अगर हर मार्केट हर साल 10% करेक्ट होते रही तो वो सेंसेक्स 62 की बैठ 26,000 होता. वो अप्रैल 2020 में 25,000 से 62 पहुंच गया 1.5 साल में. इज दैट अ स्मॉल अचीवमेंट? नो. अगर 12% के हिसाब से चले तो वो 2500 ग्रो करता हर साल में. 10% 12%, 3,000 ग्रो करता. 25,000 का 28,000 होता, अगले साल में 28,000 का 32,000 31,000 होता, देन वो 34,000 होता. उसको 62 तक पहुंचने में कम से कम 8-9 साल लगते. वो 1.5 साल में पहुंच गया. सो ब्लॉकबस्टर नहीं था, वो बाहुबली ईयर था. सो अगर कुछ करेक्शन हो रही है 10-12%, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. It rather gives you an opportunity to enter into the market if you have still not entered the mutual funds. We start looking at the equity stocks क्योंकि एक रिस्क होता है, नहीं ग्रोथ होती है, वो 1 महीने का 6 महीने में कभी डबल हो जाता है, फाइन. पर वो जुआ भी तो है ना. यू माइट बी लकी, हु कैन टाइम इट? नो वन. सो रिमेंबर दैट. सो ओवर द लॉन्ग टर्म योर फंड वुड हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट दैट इम्पैक्ट इज म्यूटेड. अगर हम एवरेज देखें 12% रिटर्न आ रही है, फेयर इनफ. लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड टोटल रिटर्न है व्हाट मैटर्स. Risk could be controlled and mutual funds can be rewarding. But the problem is जब हम बोलते हैं ना रिस्क इन्वेस्टमेंट में, तो वो कुछ सवाल है जो मन में आते हैं. Is my money safe? How much return I will get? Will I get my money back when I want it? अगर ये सब डर है मन में तो मत घुसिए, मत एंटर कीजिए मार्केट. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. These all are very valid questions. I'm not saying the questions are wrong, but that these questions suggest that you don't have even a average risk appetite. You have a very low risk appetite. Absolutely fine. आपने अपनी क्लिनिक में जब इन्वेस्ट किया था, आपके शायद पहले 4 महीने में 3 महीने में उतनी रिटर्न नहीं आई थी, उतनी इनकम नहीं हुई थी, तो क्या आपने अपनी चेयर बेच दी थी, या आपने सोचा था मेरी चेयर की इन्वेस्टमेंट तो बेकार हो गई? व्हाट यू थॉट? अभी नया टाइम है, इन्वेस्ट धीरे धीरे पिक हो जाएगी मेरी ओपीडी. I know the work. I'm confident. God is with me. I'll grow. Maybe you dealt in internal marketing, external marketing, and then
word of mouth referral. You did a lot of networking with the shopkeepers around, area people, and your practice slowly picked up, and you had good work skills with you. Your domain skills were good, your communication skills were good, and ultimately your practice picked up. But कभी किसी ने पहले 4-6 महीने में सोचा कि मेरी चेयर तो बेकार इन्वेस्टमेंट होगी, इसको निकाल ही देता हूँ. चेयर आएगा, मैं नाई वाली कुर्सी ले आता हूँ, मैं नाई वाली कुर्सी पे ट्रीट कर लिया करूँ. Do you ever think like that? No. So if you have not thought it like that, so why do you think with your money? अगर आपका पैसा आपके पास या आपके बैंक में रहेगा तो ज्यादा सेफ है. So the risk button is like a generator button, like a self button. दबता है, लो, मॉडरेट, हाई तीनों रहेंगे. That is fine. So प्रोफेशनल जो रिस्क जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. So professional fund management, you can say these funds are managed by professional fund managers जो हमसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं. Obviously their reputation is at stake, the fund house reputation is at stake. If the funds continue to keep on going down, nobody will invest in that AMC, nobody would prefer that fund house. So they have more than your money. आपका पैसा तो टोटल अमाउंट का पीनट्स भी नहीं है, बहुत जायंट पिज्जा का छोटा सा पाई है आपका पैसा. Yes, I'm not saying it is not important, but what I'm saying is they have a larger reputation and larger money to defend rather than only your small point of money. Of course, if it is a good fund manager, it will automatically mitigate the risk. And yes, as I said earlier, diversification. अगर उसका exposure in all good, you can say A-lister blue chips में है, in various sectors, वो automatically उसकी अंडर परफॉर्मेंस को मिनिमाइज कर देगा. एक सेक्टर नीचे गया तो एक सेक्टर ऊपर भी जाएगा. That will keep on happening. Very rarely there would be a phase जब सारे सेक्टर नीचे जाएंगे for continuous period. ऐसा नहीं होता है, बहुत 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 रेयर होता है ये चीज. Then selecting a scheme in line with your investment objective, the time period part. I told you about long-term perspective, the growth from 10 to 1800. So short term में उसमें कुछ नहीं चिंता करने की जरूरत. So if you have invested in an equity fund, you may have short-term fluctuations, but over the long term, you will have humongous returns. Humongous. So most people are, you can say, believe that funds, equity, all these are risky things. Equity mutual funds, I'm talking here. Because वो नीचे वो disclaimer होता है ना, mutual funds are subject to market risk. Read the scheme offer document carefully before investing. वो सेबी की गाइडलाइन है. वो तो वैधानिक चेतावनी गुटके के ऊपर भी लिखी होती है. लोग खाना बंद कर देते हैं. जिन्होंने खाना बंद किया वो उसकी वैधानिक चेतावनी पढ़ के बंद नहीं करते. उनको वैसे रियलाइजेशन होती है कि दिस इज नॉट गुड फॉर माय हेल्थ. वो वैधानिक चेतावनी पढ़ के कोई बंद नहीं करता है. तो आप वैधानिक चेतावनी और म्यूचुअल फंड पढ़ के उसमें एंटर क्यों नहीं करना चाहते? So much the world over people are making money in mutual funds, and it is a ethical legal way to make money. It is not an illegal way like a cryptocurrency जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है. It is just a सट्टा, just a जुआ. इसमें at least logistics are involved. So yes, investor protection, professional fund management and diversification mitigate the risk to a larger extent. So you have to identify आपका अपना यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में आपका आपके चेस्ट में जो रिस्कोमीटर लगा ना, वो किस मीटर पे जाता है? वो ग्रीन में है, येलो में है, पिंक में है, रेड में. आई एम काउंटिंग दिस एज द पिंक, ऑफ कोर्स नॉट अ पिंक वन, बट आई एम जस्ट काउंटिंग इट एज अ पिंक वन. सो अगर आपका लो है तो आप इसमें रहिए, डेट फंड में रहिए. अगर आपका हाई में है, वेरी हाई में, तो आप इक्विटी में जाइए. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपोजर. दिस इज द रीजन द फॉर्मूलाज आर गिवन. 80 माइनस योर एज, 100 माइनस योर एज. This is the reason you can go about it. So the carry home gyan for today, again a very short story. If you ask a travel agent, बताओ भाई साहब मैं कौन से मोड से ट्रैवल करूँ, उसका पहला क्वेश्चन होगा, भाई साहब पहले बताइए आपने जाना कहाँ है? जाना तो ये नई दिल्ली स्टेशन से मेरे को कनॉट प्लेस तक है, which is hardly 2 kilometers from there, or maybe 5 kilometers. आपको वो थोड़ा ना कहेगा आप ऐसा करो, 5 किलोमीटर जाना, आप हवाई जहाज कर लो. You will say ऑटो कर लो, रिक्शा कर लो, कुछ भी कर लो. बट अगर न्यू दिल्ली से कोची जाना तो वो आपको ये नहीं कहेगा भाई साहब ऑटो पे चले जाओ, 2 दिन में पहुंच जाओगे. ही विल प्राइस यू फ्लाइट, मार्क्स अ ट्रेन जो 1.5 दिन में पहुंच जाएगी. सो फ्लाइट इज नॉट सूटेबल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, एंड ऑटो रिक्शा इज हाईली अनकंफर्टेबल एंड स्लो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. मैं अपने क्लिनिक में बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ. आप मेरे बिल्कुल लेस देन हाफ अ किलोमीटर, 300 मीटर्स पे एक थिएटर होता था, बंद हो गया इन द कोविड वेव. सो मैं बोलता था, उसका थिएटर का नाम है ओरिएंट.
हाँ, ओरिएंट तक जाना तो आप हवाई जहाज तो करोगे नहीं, पैदल जाओगे, रिक्शा पे जाओगे. आई यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल अदरवाइज फॉर माय क्लिनिक पेशेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग. तो ये एग्जांपल म्यूचुअल फंड में बहुत कॉमनली दी जाती है. डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. डिस्टेंस मींस आपको कितनी देर में पैसा चाहिए, कितनी देर के लिए पैसा रखोगे, उसके हिसाब से आपका व्हीकल डिसाइड होगा ना. So in mutual funds too, the starting point must be what are your requirements, what are your goals, what is your risk appetite. अब जब ये लाइन बोलता हूँ ना, सर गोल्स कैसे डिसाइड करूँ, सर रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड करूँ, आई थिंक 3 सेशन में आई हैव डिटेल्ड इनफ ऑन द गोल्स एंड द रिस्क एपेटाइट. You don't need to further go into detail about that. So you need to identify your goals first. As a newly pass out, your immediate goals may be marriage and your own clinic. If you're married, then your immediate next goal would be bringing a child into the family, or maybe then the clinic expansion if you started with a small practice. Once those goals are achieved, your next immediate goals would be bringing a second child into the family. Of course, that is subjective. Most people are limiting themselves to one child only these days. So maybe another future expansion, maybe any other responsibility of the family, maybe your younger sister's marriage, or whatever reason is with that. And slowly you grow in practice, you start earning more, then your goals would become, maybe you can say, your kids kid going to the school, kid going for the higher education, then kids marriage, then your own retirement. All these are goals only. You have to save for them. You have to remember that. Some mutual funds are suitable for short term. You already got the list. You already got the names also in the previous session from me. कौन उसको सूट करेगा. बट कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं, देयर आर फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. सो अल्टीमेटली कैरी होम ज्ञान इज रिस्क बेनिफिट्स में से अगर आप देखें तो बेनिफिट्स का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है देन द रिस्क पार्ट. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिफरेंट पीपल वुड हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट. हस्बैंड वाइफ जो जॉइंट फाइनेंस वाले होंगे, उनके डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स होंगे. सम आर कंफर्टेबल विद हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, सम आर जस्ट नॉट. If you're not happy, you're not satisfied, and you're not judgy enough in that regard, you can take the help of a financial planner, investment advisor, or a mutual fund distributor to assess your risk appetite and or invest through him. This is the bottom line for all the 3 sessions, and I bring this series to an end. There will be no 4th part. So I bring this series to an end with one line, which is promoted by Government of India as well. Mutual funds sahi hai. Of course, it is a SEBI regulated website. You can have a lot of information there also. There are a lot of funny education videos also there on mutualfundsahihai.com. So do go through them. Thank you so much for a patient hearing. So this is my WhatsApp community where I keep on publicizing about the sessions that I'm going to take. Unfortunately, very few people take advantage of it, either on the live or on the YouTube. Again, it is their choice. I always say it is not my loss in any way. मैं तो जो करना है मैं करके चले जाऊंगा, बोल के चले जाऊंगा. मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं तो फ्री में बांट रहा हूँ ज्ञान. लेना ले लो, नहीं लेना आपकी चॉइस है. Of course, these will be negotiated. These will be adjusted now. Now that WhatsApp is allowed 512 now, so all these will be merged into 3 groups now in the coming days. So YouTube channel, these videos go the next day. This video will go on Thursday only, because tomorrow the HD version of the Monday's video will go. So as on 10 June, already 485 videos are there. So if you have not yet subscribed to my channel, go and subscribe, because otherwise you will be at loss, not me. So my social media presence, all by my name only, Dr. Bhavdeep. And of course, you can get in touch with me over there. Do send me a valuable feedback on my cell, on my page, on my YouTube channel, wherever you watch it. Bookers and Brick Bats both would be welcoming. I strangely feel sometimes I hardly get any feedback from my FB Live. It seems to me that wow, really the video was so bad that people don't have time to write even one line. I'm sorry, it was wrong information. I'm sorry, it was bad. I'm sorry, the audio was bad. I'm sorry, the audio was good. Whatever. People don't have time to write even one line. So that gives me just an impression by the number of views that hardly people have watched. So feedback dene ka time kiske paas ho. Again, a personal choice. What difference does it make? So thank you so much for a patient hearing. And of course, I'll stop my share for question times from all of you if there are any, and acknowledging the visitors on my FB page where this session is happening.
So, hello, Dr. Ramchandra sir. Hello, Dr. Sonia. Hello, Dr. Parul. Hello, Dr. SP Singh. So, only four people have been notified that although the live is showing six, seven people, but let's hope the things are there. So, friends, I hope this session has been value addition for all of you. This series of mutual fund now comes to an end. So, Thunder Thursdays takes place next Thursday on time with the 25th episode. But the Monday session of Miraculous Monday will take place on wonderful Wednesday. So, like this week, you had two sessions on Monday and Tuesday. Next week, you will have two sessions on Wednesday and Thursday on practice management and finance, respectively. Because I'll be traveling for 3-4 days in between, so I don't want to carry my laptop and make mistake, uh, trouble myself of the session over there. When the audience interest is there, you always long to do it. But I am doing it since I've committed and it is a part of my duty anymore. Even I'm not excited to come on a Thursday or a Monday anymore, frankly. When the interest wanes, you really don't feel because the participation has been pretty much dismal from almost all of you. So only a few regular visitors and those of you who are watching. Again, a personal choice. I have no comments to say about that. But yes, commitment of 26 episodes is there. Even my interest has waned off. I'll still complete the 26 episodes. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a great weekend ahead.